for so long. We've been waiting for this time to begin. Hi everyone and welcome back to my channel. In case you're new to this channel, my name is Harshita and I'm currently a second year student at National Law University, Delhi. This is one of the most requested videos ever. You all really wanted to see an NLU Delhi vlog, so I thought why not make like an exam week in my life, because it'd be really nice when I see this video when I graduate. This is how my semester 4 midsims were, this is how the journey felt like. So it's like a little video journal for me as well, and I'm really excited to see how this video turns out. I hope you all like the video. And today is Friday, it's currently 10:44 p.m. I have my first exam on Monday, and I've not started preparing for that exam yet. So yes, let's get started. Alright, so I could not really record that day itself because something extremely important came up, and therefore I was like, okay, we will have to study for exams, but right now I need to get this done with. And so next day onwards I started studying for criminal law. Now I really like criminal law as a subject, especially when we are studying like the substantive part. What is mens rea, what is actus reus, what is concurrence. We're going to study about murder, culpable homicide and everything. And after studying I went out because the weather was Hi. So अब हम कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं. Yes, coffee packers since होप day one. हाँ, एक्चुअली वी आर डे वंस. और आई थिंक हम लोगों का 1 घंटा भी जाएगा, उसके बाद जाके हम लॉक इन करेंगे. फिर हम आज डिनर भी ऑर्डर करने वाले हैं. दिस इज़ हाउ वी डील विद एग्जाम्स. Obviously. एंड द कैंपस लुक्स रियली नाइस राइट नाउ. ओके, सो अब हम रूम में, और दिस इज़ भव्या. मैंने किसी के साथ ट्विन किया है जो मुझे बहुत पसंद है. दिस इज़ भव्या एंड अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे साथ में मिलके. होपफुली एक अच्छा सेशन हो जाए. लेट्स गो. Hopefully, of course. Yes, and then we started studying, I guess. This is some next level shit, yaar. So I mean, essentially we talked for a while and then we started studying. Now I think study sessions are really helpful, at least for me. Even when I was preparing for CLAT and A-Late, I used to do a lot of study sessions. This day I had a good study session, but after which I was extremely tired, so I just did my night routine, which is reading a book and just slow winding down. I did that and I slept. And then next day I woke up and started studying because यार एग्ज़ाम अगर बिल्कुल कल होता है तो आज ही सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. एंड देयरफॉर आई हैड टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैड टू डू पूरा रिविजन एंड एवरीथिंग, सो आई कुड नॉट इवन रिकॉर्ड मच दैट डे. सो एन अपडेट, इट्स करंटली 10:40 p.m. I'm so sleepy, but tomorrow we have Criminal 1. I'm thinking to take a power nap of like 20ish minutes and then wash my face and start with crim law, like the revision, and also some points where I'm not very confident in everything and I have to learn everything. So yes, we are gonna sit and do that. I plan to start it by 11:15ish and complete it by 2 o'clock. Anyhow, I need to actually see PYQ as well. So I'm sitting on my upper bunk right now and आज था क्रिम का एग्ज़ाम. I think it went fine. It was a bit lengthy and I have no clue about what the result's gonna be, of course, but at least हो गया. Tomorrow we have economics, so now it's currently 6:30 p.m. I was super hungry after the exam, so I went to sleep and then just had a sandwich and coffee from Amul, and now we have to lock in for economics because eco is something. So my plan is to do like a 2-hour study session right now and then go for dinner and do rest of the work. Yes, let's go. Yes, so as you already know, I just went and gave my exam, and after that, now these exams specifically, I have done a lot of study sessions with Chandler. We used to study together. I think it really helped specifically in subjects like economics and stuff, wherein and I missed a lot of classes this semester, to be fair, because I had my mood, I had ICC and stuff. So I missed quite a few classes, and therefore he helped me a lot with concepts. Like, genuine shout out to my friends
all of them, Bhavya, Chandar, and other friends, they've genuinely helped me so much with my exams and notes and everything. And I think it just becomes very easy when your friends are there for you. I'm genuinely extremely grateful for my friends that way. So, we did a lot of study sessions together this semester and specifically during midsems, and we are just hoping that our results are good so that we can continue doing this. After studying again, it was a good study session, after which I came back to my room. I'm showing you all my room because I love how this looks at night. And I did my journaling and then I slept. हाय एवरीवन, आज हमारा है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। मुझे नहीं पता चंदन हमेशा क्यों हंसता रहता है फॉर सम रीज़न। और हम यहाँ पे बहुत ही प्यारी जगह पे बैठे हुए हैं कैफेटेरिया की टेबल्स पे, और मेरी आंखें खुल भी नहीं रही है, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि मैंने बहुत अच्छी से नींद ली है। एंड येस, अब हमारा एम है कि हम एक रिविज़न फाइनल करें एंड देन जाके पेपर दें। Yes, आप हंस क्यों रहे हो? ऐसी Okay, so a short story. I really love this place because I remember even like when I was in my second semester and I had my midsems going on, I used to wake up early and walk barefoot on the grass here and then do my revisions. And this semester as well, for midsems, we did our study, like the morning study sessions here, and it just feels really nice because there are flowers around you. It's spring season, you know. Specifically when you're doing it with one more person, it just becomes extremely easy. And I think if you have like a good study partner, things become really easy that way. So we were just doing our study session here and then we went and gave eco. Hi guys, so अभी हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। क्या बोला है उससे मेरे पीछे से? क्या बोला है? इन दोनों की ऐसी लड़ाई होती रहती है। अब हम जा रहे हैं इको का एग्ज़ाम देने के लिए एंड आई विल गिव यू रिव्यू कैसा होता है। आई थिंक इन दोनों का एक अपना बिग बॉस होना चाहिए एट दिस पॉइंट, लाइक जेन्युइनली। सो अभी हमारा एग्ज़ाम ओवर हो गया है। ये नैश इक्विलिब्रियम निकालना है तो मैम ने नहीं अमेजिंग प्लेयर है। मैंने लिख दिया था कि देखो मैम ने कहा हमेशा यहाँ पे होगा जब तक मैं बोलूंगी नहीं। आफ्टर एग्जाम सीन सेट एंड ड्यू डेट। और इसमें मैं भी कंफ्यूजन, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि ये मैक्सिमम है तभी मैं कर रहा हूँ। अगर हमारा इको का एग्ज़ाम हो चुका है। ये इंसान हमेशा अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहा होता है इको के बाद। और भव्या यहाँ पे, और अब हम बीसी गार्डन में बैठे होंगे। बस बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बट अभी हम कैफेटेरिया में हैं एंड कल हमारा प्रॉपर्टी लॉ का एग्ज़ाम है। अभी 10 बज रहे हैं। आज हमें बैठ के प्रॉपर्टी लॉ कंप्लीट करना है। yes. विशेस बेस्ट ऑफ लक। बस कल का एक बार एग्ज़ाम हो जाए, फिर हमारे लैंड लॉ में 1 दिन की छुट्टी और एडमिन में 2 दिन की छुट्टी, तो वो हम कर लेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये चंदर की नोटबुक है। वो दिखा ना, वो कहाँ गया मेरा क्या? न्यू सेमेस्टर की स्टार्टिंग। ओह हाँ, तो कल चंदर बोलते हैं कि हर्षिता ये देखो, और मैं बोल रही हूँ प्रॉपर्टी लॉ इधर, फिर वो कह रहे हैं ये देख। कुछ भी चलता है। अब हम प्रॉपर्टी लॉ करते हैं बैठ के। यस होपफुली 10 बजे हम 2 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर दें। यस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हमारा 1 बजे तक हो जाना चाहिए। यस, सेम। मैं यस, मोमो खाऊंगा इस टाइम। Alright, so then we started studying for property law. Now in cafeteria you can study till like 2 AM or something, after which you have to go sit somewhere else because the cafeteria closes. So our aim was to complete the syllabus by 2 AM and then go at a CAD reception and do whatever is left in case, or do revisions and clear doubts and everything. So we are just studying here. There were almost 50 cases which we had to cover, so we are trying to discuss that, cover that all. Guys, Hello. आज मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट अब हम जा रहे हैं हमारा प्रॉपर्टी लॉ का एग्ज़ाम देने एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। फोड़ देंगे। फोड़ देंगे। लेट्स गो। और आज के बाद फिर हमारा 1 दिन का ब्रेक भी है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। सिर्फ हमारे केसेस ज़्यादा है, इतना कुछ है नहीं, सो होपफुली हो ही जाएगा। बट लेट्स गो, सी यू ऑल आफ्टर द एग्ज़ाम। हाय गाइस, अभी मैं बस इको का पेपर देकर ही आई हूँ एंड आई थिंक, मैं क्यों बोल रही हूँ इको का, मैं एक्चुअली प्रॉपर्टी का पेपर देकर आई हूँ एंड आई थिंक अच्छा हुआ है। बट लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स अभी, बट इट इज़ डन एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। बाय बाय। Reggie, I'm recording this for my YouTube. Do you want to say something? I love her. And I love Reggie. She's like the sweetest person, guys. I'm supposed to say And these are my 2 friends. अभी पता नहीं यहाँ पे कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। hi guys, I'm Pradosh. Yes. Bye bye guys. प्रदोष, See you. आई एम प्रदोष। कुछ भी।
So after this, all of us went to ISKCON temple and also outside to eat some good food, and we were tired again. Hi guys, so I am in my room right now. The lighting is really bad here, but I was just really tired, and after the exam we went out to the temple, we had fun, and now I am on my bed just reading a book because I think it's the burnout. And tomorrow we will do landlord. Today I'm not going to study at all. And just another appreciation for my upper bunk. See, I love this corner so much. Like, this looks. And now this is the next day. So I was sitting outside cafeteria and on those tables where we do our morning revision, and I was enjoying my coffee and everything. But then पहले हमने इतनी मस्ती की पूरे दिन और अब काम करना पड़ रहा है क्योंकि सारी चंद्र की गलती है. क्या क्या है? So after exams we went to this really cute cafe, and there was this really cute kitten there. I could not give an ending to the vlog. Sorry for this abrupt ending. Bye bye, take care.